Paint your masterpiece today. Think of your day as a blank artist canvas. If you go through your day passively accepting whatever other people and circumstances splatter on your canvas, you will more than likely see a mess where art could be. अगर आप अपना जो डे है पूरा दिन के अंदर जो भी पीपल आपके लाइफ में आते हैं, जो भी परिस्थिति आपके लाइफ में आती है, अगर उससे ही पैसिवली आप स्ट्रगल करोगे, अपनी अपनी लाइफ में आने दोगे, तो आपका जो कैनवास है, जो भी एक पेंटर होता है उसका जो कैनवास होता है उसके ऊपर वो पेंट बनाता है, तो वो जो आप पेंट बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपका जो गोल है वो आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। और अदरवाइज क्या, और इसकी जगह क्या होगा कि जो भी लाइफ लाइफ और पीपल और सर्कमस्टेंसेस वो आपके लाइफ में अंदर ऐड होते जाएंगे, वो ही आपके लाइफ में रहेगा, आपका गोल नहीं रहेगा। इफ द मेस ट्रबल्स और स्लीप, your next new day will begin in the state of fatigue and male confusion. From such a state, your canvas will be splattered, all the more with shapes you don't like and colors you never choose. आपका जो कैनवास है और आपकी लाइफ है वो जो आप चाहते थे वो ऐसा नहीं बनेगा, और जो अदर पीपल और सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से बन जाएगी। Thinking of your day as a painter's canvas will allow you to be more conscious of what is happening to you when you flood your mind with nothing but internet gossip, commercial on the radio, the latest murder trial, your spouse's criticism, office politics, and pessimistic musical lyrics. If you will allow yourself to step back far enough to realize and truly see that your daily canvas is filling up with all these negative things, a certain freedom occurs. It's the freedom to choose something better. अगर आप ध्यान से देखोगे कि भाई मैं जो अभी कर रहा हूँ, जो नेगेटिव थिंग्स हम मेरे दिमाग में डाल रहा हूँ वो नहीं डालना चाहिए, तो आपके अंदर एक स्वतंत्रता आएगी कि नहीं, अब मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ पॉजिटिव चीज़ें डालनी चाहिए। The more conscious we are of our freedom to paint whatever we want on our canvas, the less we go through a life as a victim of circumstances. Many people अपने लाइफ में देखोगे कि वो बोलते हैं कि मेरी परिस्थिति की वजह से मैं अभी ऐसा हूँ, कि मुझे ये परिस्थिति की वजह से मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कॉन्शियस नहीं होते अपनी लाइफ के अंदर। Many of us are not even aware of our own victim status. हम ही खुद के जिम्मेदार हैं, वो अवेयर ही नहीं होते उसके स्टेटस से। We read whatever on the coffee table, listen whatever on the car radio, eat whatever handy, scan whatever on the internet, talk to whomever calls us on the phone, talks to whomever calls us on the phone, and watch whatever on the television, often too passive to even click the remote control. We must be aware that we have it in us to change all that. We must be aware that we have it in us to change all that. हमारे अंदर भी एक है कि हम ये सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, हमको अवेयर होना चाहिए। We can paint our day our way. We can paint our day our way. The best time management or day painting course I ever took was taught by Dennis Dayton. His seminar's main point is that we can't manage the time, we can only manage ourselves. Clear the clutter, clear the clutter from your mind, Dayton says, and remove the obstacles to greater success. Clear the clutter from your mind and remove the obstacles to greater success. While the most time management courses feel like a courses in the engineering, Dayton has captured the spirit of the artist in his teaching. Deaton has captured the spirit of the artist in his teaching. His prescription for managing your day all stem from goal creation and living the visions you create.
from goal creation and living the visions you create. Wake up and visualize your day as a blank canvas, as yourself. Who's the artist today? Blind circumstances or me? If I choose to be the artist, how do I want to paint my day? Thank you very much.